Very good morning, students. I hope you all are studying well. Your studies. I'm your computer teacher, and today we are going to learn and understand our very first chapter, which is computer and its different types. Now, अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा कंप्यूटर क्या है, उसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है, and many other things. So, without wasting any further time, let's understand the chapter. The name of our chapter is Computer and its types, and the topics which we are going to cover here are categories of computers based on the principle of operations and categories of computers based on configuration. So first हमारे पास एक activity है which says name the following device. So this is our hard disk. This is our keyboard. This one is our printer, and this is our pen drive. Now, the increasing use of computer in our lives has resulted in a new and improved way of thinking, living and working. Earlier, computers were used mostly by scientists and engineers for complex calculations and they were very costly. Nowadays, a computer is within the reach of every working person. Let's know about the different categories of computer. First is categories of computers, which is based on principle of operation. On the basis of their types and functioning, computers can be classified into three categories which are as follows. First is analog computer. Analog computer क्या है? Analog computer वो computer है which is used to process continuously verifying data. यानी कि इसको यूज किया जाता है ताकि ये continuously vary कर सके, हमारे डेटा को प्रोसेस कर सके. Everything we see and hear is changed continuously. जो भी चीजें हम सुनते हैं या देखते हैं वो continuously change होती रहती हैं. This changeable continuous stream of data is called analog data. Analog computer can be used in scientific and industrial applications. हम एनालॉग कंप्यूटर्स का साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, सच एज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट, फ्रीक्वेंसी एंड रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स है हमारे एनालॉग कंप्यूटर के टेम्परेचर, प्रेशर, टेलीफोन लाइंस, स्पीडोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल एंड वोल्टेज एक्सेट्रा. डिजिटल कंप्यूटर वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी डिजिट सिस्टम, यानी कि 0 और 1 के ऊपर जो वर्क करते हैं. बाय काउंटिंग, कंपेयरिंग एंड मैनिपुलेटिंग दीज डिजिट्स. 0 और 1 को काउंट करके, कंपेयर करके या मैनिपुलेट करके एक डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, और क्या देता है? एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है बहुत फास्टली. जो भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो करंटली हम यूज करते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स के ही एग्जांपल है. फिर आता है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर रेफर करता है टू अ कंप्यूटर जो प्रोवाइड करे क्या? फंक्शनैलिटी किसकी? बोथ एन एनालॉग एंड अ डिजिटल कंप्यूटर व्हाइल प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा. डेटा की प्रोसेसिंग में और डिस्प्लेइंग में जो दोनों कंप्यूटर के एस्पेक्ट्स को रखता है, यानी कि एनालॉग के भी और डिजिटल के भी, वो हमारा होता है हाइब्रिड. It uses the speed of analog computer and accuracy from digital computer. For example, heartbeat measuring machine. Heartbeat measuring machine एक example है hybrid computer का, जिसके अंदर speed तो होती है हमारे analog की और accuracy होती है digital computer. Also, India got its first computer in the year 1956. It came in Indian Statistical Institute, Kolkata. India thus became the second country in Asia after Japan to get computers. Now, categories of computers which is based on principle of operation. Computers can be differentiated on the basis of their physical structure. हम कंप्यूटर को differentiate कर सकते हैं उनके physical structure के basis पे, और purpose of their use, कि कौन सा कंप्यूटर किस purpose के लिए use किया जा रहा है इस basis पे. Based on their capacity, speed, reliability, they can be divided into the following categories. Capacity, speed और reliability की basis पे हम इन computers को यहाँ पे हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. तो पहला हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा, रिलेटिवली एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव यानी कि कम एक्सपेंसिव कंप्यूटर है जो क्या सीपीयू को कंट्रोल है उसके पास में, और ये मेड आउट करता है एक माइक्रो प्रोसेसर को. द कंप्यूटर ऑल्सो इंक्लूड मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट.
Input output circuitry together mounted on a printed circuit board PCB. माइक्रोकंप्यूटर्स जो है वो पॉपुलर हुए हैं इन 1970s एंड 1980s में विद द एडवेंट ऑफ इंक्रीजिंगली पावरफुल माइक्रोप्रोसेसर्स। यहाँ पे क्या था, बहुत पावरफुल माइक्रोप्रोसेसर्स का यूज था। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मेड टू बी यूज्ड बाय अ सिंगल यूजर। इस तरीके के जो कंप्यूटर्स होते हैं ये सिंगल यूजर ही यूज कर सकता है एट अ टाइम। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके जैसे माइक्रो कंप्यूटर के। पहला हमारे पास आता है डेस्कटॉप। इट इज अ कंप्यूटर विच इज केप्ट ऑन अ डेस्क। वी नो दैट इट कैन बी मूव्ड। इसको हम मूव नहीं कर सकते इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज बिग इन साइज। इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑल द पार्ट्स आर सेपरेटेड। हर पार्ट सेपरेट होता है और वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। किसकी मदद से? वायर की मदद से। फिर हमारे पास इसका दूसरा एग्जांपल है लैपटॉप। लैपटॉप भी छोटे होते हैं साइज में। एल शेप कंप्यूटर्स हम इनको कहते हैं, ठीक है। और दे कैन बी इजीली कैरीड, और हम इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये छोटे होते हैं साइज में और इजीली फिट हो जाते हैं इन आर यूजर्स लैप। जो लैपटॉप होता है ये कंटेन करता है बैटरी जिसको हम चार्ज करते हैं। ऑल द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट इज द कीबोर्ड, सीपीयू एंड स्पीकर्स ऑल आर देयर इन अ लैपटॉप विद नो एक्सटर्नल वायर्स। ये सारी चीजें हमारे कंप्यूटर में होती हैं, इस लैपटॉप में होती हैं, पर देयर आर नो वायर्स। अनदर एग्जांपल इज टैबलेट। टैबलेट पीसी जो होता है ये बिल्कुल सिमिलर लगता है लैपटॉप की तरह ही। द ओनली डिफरेंस इज दैट टैबलेट पीसी डज नॉट हैव एनी कीबोर्ड। इसका कोई कीबोर्ड नहीं होता। ये कंसिस्ट करता है टच स्क्रीन को जिसको हम यूज करते हैं टू राइट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन रेदर देन टाइपिंग आउट सेम ऑन अ कीबोर्ड। Handheld computers. The smallest computer is the handheld computer, also called a personal digital assistant. हम इसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोलते हैं। इसको यूज किया जाता है फॉर scheduling appointments, storing addresses and playing games. PDAs are pen based and also battery powered. इनको हम पेन से चलाते हैं, ये बैटरी पावर्ड होते हैं। They use a pen like stylus. एक पेन इस तरीके का पेन यूज करते हैं जिसमें स्टाइलस होता है जो एक्सेप्ट करता है हैंड रिटन इनपुट को डायरेक्टली ऑन अ टच sensitive screen. Embedded systems. An embedded computer is a special type of microprocessor based system. ये एक स्पेशल टाइप का माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है जिसको डेवलप किया गया है फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जो भी अप्लायंसेज होते हैं जिनके अंदर डिजिटल इनहेरिटेंस होता है, जैसे वॉचेस होती हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, वीसीआर होते हैं, कार एक्सेट्रा, ये सब यूटिलाइज करते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स को। The embedded systems are pre-programmed for a specific task and operate on electricity and battery. Electricity और battery पे चलते हैं. They are available in wide range of size and power. Now we have some exercise or activity which is unscramble the following words. It is a laptop, L-A-P-T-O-P, laptop. DESKTOP, desktop. TABLET, tablet. Now mini computer. Mini computer एक ऐसा कंप्यूटर है which has all the features of a large size computer. इसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं एक बड़े साइज की कंप्यूटर जैसे, बट इसका साइज छोटा होता है। Mini computer lies between the mini frame and the micro computer. The mini computer is also called as mid-range computer. हम इसको mid-range computer भी बोलते हैं। Mini computers are mainly multi-user systems. ये multi-user systems होते हैं जहाँ पे हम more than one user can work simultaneously. जहाँ पे एक से ज्यादा यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं बिजनेस में, एजुकेशन में और मेनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। सम एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स आर IBM AS400E, Honeywell 200, TI 990। फिर नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लार्ज जो होते हैं, लाइक बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर्स से। दे आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस and data processing tasks. They can connect to multiple end clients simultaneously, so the several users can access different applications and processes running on the mainframe concurrently without impacting performance or security. यहाँ पे several users एक साथ access कर सकते हैं different applications को, process कर सकते हैं running on the mainframe concurrently बिना impact डाले performance पे या फिर security पे। कुछ एग्जाम्पल्स है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के।
IBM S390 mainframe, which support up to 50,000 users simultaneously. सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ये फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं हमारे वर्ल्ड में दैट कैन प्रोसेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा. ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हैं बहुत क्विकली. द कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड वेरी हाई एज कंपेयर टू द जनरल पर्पस कंप्यूटर. जो इनकी परफॉर्मेंस होती है ये जनरल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा हाई होती है. ये केपेबल होते हैं ऑफ प्रोसेसिंग ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. ये एक सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये यूज करे जाते हैं बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, space exploration, large organizations and research laboratories. And some examples of supercomputers are PRAM, Cray1, Cray2, ETA 10, etc. Cray supercomputer was invented by Seymour Cray. The Cray supercomputer is nicknamed Bubbles because it is bubbling coolant liquids. There are some points to remember. Computer memory refer करती है to a storage capacity of a computer. Analog computer is that computer which is used to process continuously varying data. Digital computer work on the principle of binary digit system, that is 0 and 1. Hybrid computer uses the speed of analog computer and accuracy of digital computer. A microcomputer is a small, relatively inexpensive computer having a central processing unit made out of a microprocessor. मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मेनली मल्टी यूजर सिस्टम्स होते हैं. देवर मोर देन वन यूजर कैन वर्क साइमल्टेनियसली. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो यूज करे जाते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग टास्क. सुपर कंप्यूटर्स फास्टेस्ट कंप्यूटर है इन द वर्ल्ड और वो प्रोसेस कर सकते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली. नेक्स्ट अप वी हैव आवर एक्सरसाइज. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. Which type of computer operates by measuring instead of counting? It is analog computer. In which form is the data represented in digital computer? Binary form. Honeywell 200 is an example of mini computer. PRAM is an example of supercomputer. And which of the following is an example of hybrid computer? Heart beating machine. Fill in the blanks. Dash is a computer which is kept on a desk, desktop. Dash uses the speed of analog computer and accuracy of digital computer, hybrid. Dash use a pen-like stylus that accepts handwritten input directly on a touch-sensitive screen, handheld. A dash is also called a mid-range computer, microcomputer. And dash is a small computer that is used by one person at a time, mini computer. Now, next is our true or false. First is digital computer provide the functionality of an analog computer. True. The changeable continuous stream of data is called analog data. True. Mini computers are smaller than microcomputers. True. Cray1 is a supercomputer. True. And the embedded systems are pre-programmed for a specific task and operate on electricity on battery. That is also true. So students, this was your chapter about computer and its different types. I hope it is clear to you. Do revise it again and also learn and practice your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.